Hi everyone, good evening and a very warm welcome to Thorough Newspaper Analysis. Today is 28th of April and this entire video series is brought to you by LawSikho. Now this is our utmost sincere effort in facilitating your preparation and we really hope that it caters to your syllabus requirements. Now as far as the agenda for today is concerned, the first segment is the editorial segment. For today we have two important editorials to discuss. This is going to be the first topic of our discussion, which is what law says in FIR in sexual harassment cases. देखिए इसके रिस्पेक्ट में हमने हमारे प्रीवियस TNA में भी एक फुल फ्लेज्ड स्टोरी कवर करी थी. सो रिसेंटली द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके जो प्रेसिडेंट है उन पे काफ़ी सिवियर एलिगेशंस आर लेवल्ड बाय विमेन रेसलर्स, जिनमें एसेंचुअली उन्होंने ब्रॉडली तीन पैरामीटर्स को टच अपॉन किया है. फर्स्ट इज एलिगेशन with respect to sexual harassment, then criminal intimidation and malfunctioning of the entire federation and mismanagement of the funds of it. अभी रिसेंटली क्या हुआ कि द प्रोटेस्टर्स, देर आर सर्टन रेस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, दे आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज वन ऑफ द डिमांड्स इज दैट FIR शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन, बट वो हो नहीं पाया है. तो इस रिस्पेक्ट में इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड पेज है उस पर देर इज अ ब्यूटिफुल आर्टिकल जिसमें दिस डिस्कसेस द एंटायर लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR when cognizable offence is disclosed, and it also touches upon the topic of what legal recourse does a person have once the FIR is not lodged or the police officer refuses to do so. Now the second article, it is titled as State on Same-Sex Marriage. Essentially यहाँ पर हम कुछ की 6 आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे which were put forth by the Solicitor General of India श्री तुषार मेहता before the Honorable Apex Court, जहाँ पे उन्होंने सेंटर विच इज़ द यूनियन ऑफ इंडिया उसका स्टैंड क्लियर करते हुए कुछ आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉर्थ करिए ऑन द पेटिशंस सीकिंग लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज. सेकेंड सेगमेंट इज द न्यूज़ अपडेट सेगमेंट, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट्स को डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली वी हैव द लीगल न्यूज़ अपडेट सेगमेंट. So with this, let's start with the first editorial, which is what law says in FIR in sexual harassment cases. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द वाई ऑफ दिस आर्टिकल. तो देखिए ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया दिल्ली पुलिस को, एंड दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय 7 रेसलर्स. इन रेसलर्स ने, इनकी डिमांड एसेंशियली ये थी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द एलिगेशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट. अब इसमें हम ब्रॉडली कुछ पॉइंटर्स जो जिनकी बात करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉट दोज पॉइंटर्स डाउन बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर जुडिशरी एग्जाम, CRPC या क्रिमिनल लॉ का जिनका पोर्शन है. पहले तो वी गोइंग टू टेक अप द डिस्कशन अराउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन कॉग्निजेबल मैटर्स. Then we are going to take up the question of whether non-registration of an FIR on part of an officer in charge of a police station or a public servant, this is an offence or not. And then we are going to touch upon an interesting aspect of POXO Act because यहाँ पर one of the complainants जो थी she was a minor, तो इसीलिए POXO Act की provisions attract हुए. तो POXO Act में हम देखेंगे कि FIR registration के with respect में क्या कोई provision है. And then we are going to discuss an important aspect of what if the police refuses to file an FIR. तो हमारे पास क्या legal recourse available है. इसके respect में हम दो sections की बात करेंगे, section 154 and section 156 of the CRPC. And lastly, we are going to touch upon this topic, which is can a preliminary inquiry be conducted before registration of an FIR? तो देखिए as far as this question is concerned, इसके लिए relevant provision is section 154 subsection 1 and section 2 subsection C of the CRPC. 2C CRPC का वो डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को. सी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एसेंशियली दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं ब्रॉडली, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू मेक अरेस्ट in accordance with the first schedule as well as any other law without the warrant or permission of a magistrate. And police officer जो investigate भी कर सकता है offense को without an order from the magistrate. अब अगर ऐसा कोई offense है एंड कोई कंप्लेनेंट है, कोई पर्सन है who has knowledge of commission of a cognizable offense, वो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वो पुलिस स्टेशन के पास जाता है एंड he discloses the information which discloses the commission of a cognizable offense. So then as per section 154 and the case of Lalita Kumari, it is mandatory on part of the officer in charge of police station to lodge an FIR
इन दिस पर्टिकुलर मैटर। अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है जीरो एफआईआर का। सी अगर कोई ऑफेंस जो है वो किसी एक एरिया में हुआ एंड अगर उसकी रिपोर्ट जो है वो दैट इज बीइंग फाइल्ड इन ए पुलिस स्टेशन ऑफ विच डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन, तब यहाँ पे ये रेलेवेंट आता है कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का। तो यहाँ पर जहाँ भी जो अगर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसको हम नंबर नहीं देंगे एफआईआर नंबर, एंड देन ये मैटर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पर कि फिर ये मैटर फर्दर कैरी ऑन हो सकता है। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द इवेंचुअलिटी ऑफ फेलियर टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस रेलेवेंट है ऑन ये। जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी जो थी, this filed report on this is a committee on amendments to the criminal law and this was formed post the Delhi gang rape matter of 2012 and इसमें pursuant to the recommendations एक section insert हुआ IPC में which is section 166A. By virtue of that section it says that whenever a public servant जो है he fails to make a report ऑफ एनी ऑफेंस, तो फिर देन उसके लिए कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो अट्रैक्ट होती है, और वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है मिनिमम 6 months की इम्प्रिजनमेंट एंड द इम्प्रिजनमेंट में गो अप टू 2 years एंड देयर इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी टू पे फाइन। इस केस में इस पर्टिकुलर सेक्शन में सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कवर्ड है। हावेवर स्पेशली जो ऐसे ऑफेंसेस है विच इज ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, गैंग रेप, उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ट्यूसडे की अगर हम प्रोसीडिंग देखें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हु वाज रिप्रेजेंटिंग द रेसलर्स, he mentioned this particular section while arguing before the honorable apex court and he submitted that the complaints they were given to the police on 21st of April, but police ने FIR नहीं लॉन्च करी, following which they approached the honorable apex court। जो होम मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट की, उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी करी थी जहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि इट इज़ मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस व्हेनेवर देयर इज अ कमीशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेगमेंट ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो देखिए पॉक्सो एक्ट इट मैंडेट्स द रिपोर्टिंग ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस एंड स्पेसिफिकली एक सेक्शन है विच इज सेक्शन 20 नंबर 1, सेक्शन नंबर 21। उस सेक्शन में इट कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट एनी फेलियर टू रिपोर्ट द ऑफेंस or failure to report such an offence, it shall be punished with jail extending to 6 months or with fine or with both. Therefore, इस particular act में it makes it mandatory for the reporting of crimes to be filed whenever it is received by any complainant, अगर चाहे complainant जो है वो child भी क्यों ना हो। Now let's come to an important segment of what happens when the police refuses to lodge an FIR. देखिए इसके रिस्पेक्ट में एक जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 एंड द अनदर सेगमेंट इज 156। सो 154 सबसेक्शन 3 इट कैटेगोरिकली स्टेट्स कि व्हेनेवर एनी पर्सन comes to an officer in charge of police station, discloses commission of cognizable offence and the police officer does not lodge an FIR, then you put forth this information in writing before the superintendent of police. The SP is going to look into the matter. अगर cognizable offence disclose हुआ है तो या तो he can proceed with the matter and go about carrying on the criminal mechanism, या फिर he can depute his superintendent to do so. So that is 156 का subsection 3. Now there is another section 156. This is 154 subsection 3. Now there is another section which is 156 subsection 3, which provides for the power of investigation in cognizable cases. And essentially subsection 3 कहता है कि magistrate has the power to order investigation by the police. अब इसमें 3 इवेंचुअलिटीज हो सकती है। देखिए जो हम प्रेसिडेंट्स वगैरह से हमारी इंटरप्रिटेशन से अंडरस्टैंडिंग आई है, एक तो अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई विद रिस्पेक्ट टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस डिड नॉट लॉन्च द FIR, देन यू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर 156(3) seeking directions to police to investigate the matter. Secondly, you would be familiar, I'm assuming, with section 190 of the CRPC, which provides for the ways using which a magistrate can take cognizance of a matter. तो उसमें क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पे। पुलिस रिपोर्ट इज योर एसेंशियली चार्जशीट। उसका मैकेनिज्म क्या होता है? FIR, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, देन 190 एंड देन कॉग्निजेंस ले लेता है मैजिस्ट्रेट एंड फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पूरी चालू हो जाती है।
Second is when a person directly approaches the magistrate by virtue of a complaint under section 200 of the CRPC. And thirdly, when the magistrate so moto take the cognizance, or he gets the information from any sources which is other than these two sources, and he takes a cognizance there. तो ये जो बी एंड सी है, जहाँ पे कंप्लेंट या अदर इन्फॉर्मेशन पे मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर आता है, वहाँ पर प्री कॉग्निजेंस स्टेट पे, मतलब कि कॉग्निजेंस लेने से पहले भी मैजिस्ट्रेट जो है 156 के 3 को यूज करके मैटर कैन बी रेफर टू द पुलिस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ट्यूसडे को जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट the relevant provision or remedy that the petitioners can approach of is section 156 of the CRPC. If a person is aggrieved by the police's refusal to file an FIR, a complaint can be made before a magistrate under section 156 subsection 3. The magistrate can then order registration of a case at the police station, and the complaint before the magistrate, it would be treated as an FIR and the police can initiate its investigation later. Now let's come to the last segment, which is can a preliminary inquiry be conducted before registration of an FIR? देखिए यही पूरा bone of contention था. This was the moot proposition before the Honorable Apex Court in the case of Lalita Kumari versus State of UP and others in the year 2013. तो सुप्रीम कोर्ट का इस रिस्पेक्ट में ये कहना है कि जब भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन डिस्क्लोज होती है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, he is duty bound to lodge an FIR. There is no scope of if and but. However, preliminary inquiry conduct हो सकती है कुछ eventualities में, but उसका scope क्या होगा और वो कब होगा, let's discuss that. The scope of preliminary inquiry is merely to determine कि क्या offense cognizable है या नहीं है. Offense हुआ है नहीं है, we do not have to get into that. We just have to stick to ascertaining whether the offense is of cognizable nature or not. And अगर वो cognizable है तो then you conduct a preliminary assessment within 7 days, and अगर वो पता चल जाता है कि it's a cognizable case, then you outrightly lodge an FIR. अब जो कुछ instances कोर्ट ने साइट किए हैं वो है marital dispute, commercial offences, medical negligence, corruption cases और cases where there is abnormal delay in reporting the matter. इन सब केसेस में जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करी जा सकती है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. हमारी previous TNAs में भी we discussed this matter in detail, and we talked about the provision in IPC which regulate the offence of sexual harassment. I would request all of you to put down which section of the IPC provide for the offence of sexual harassment, and also state whether it is a cognizable offence or non-cognizable offence, and also thirdly, I would request all of you to put down in the comment section whether what do you think, can a preliminary inquiry be conducted here, जो कि actually it was stated by the Solicitor General of India Mr. Tushar Mehta before the Honorable Apex Court कि Delhi Police का ये कहना है, it feels that there is a need to conduct a preliminary inquiry before the FIR can be lodged. So what do you think should be the way forward? With this, we proceed to the next editorial for today, which is with respect to the central government's stance on the entire matter of same-sex marriage. तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी आर्ग्यूमेंट्स दे वर पुट फॉर्थ बाय द सॉलिसिटर जनरल फॉर इंडिया. उनकी ये कुछ की आर्ग्यूमेंट्स थी. द फर्स्ट ऑफ विच इज विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ मैरिज. तो एसेंशियली ही स्टेटेड कि जितने भी हमारे रिलीजियस लॉज हैं जो कि मैरिज को गवर्न करते हैं, उनमें शुरू से ही हमारी जो मैरिज की अंडरस्टैंडिंग है उसमें देर आर टू इम्पॉर्टेंट एंटिटीज, अ मैन एंड अ वुमन. And he also stated कि जो so-called secular law which is the Special Marriage Act, it also originated from personal laws. So the said secular enactments, they were enacted not as a means to create a new social legal institution, rather it is a means to overcome some limitations of religious personal laws. Secondly, he stated that there is a legitimate interest of the state. यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितने भी पेटिशनर्स हैं उन्होंने बहुत असर्टिवली ये आर्ग्यू किया है कि स्टेट का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. हावेवर सेंटर का ये कहना है कि सेंटर डज हैव अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन रेगुलेटिंग मैरिज, स्पेशली जब सेंटर ने कितनी सारी चीज़ों को तो रेगुलेट कर रखा है लेजिस्लेचर ने बाय लॉ, योर डिवोर्स, cognizance, then restitution of conjugal rights, and there are other matters also जो कि मैरिज के डोमेन में फॉल करते हैं और जिनको गवर्न कर रहा है लेजिस्लेचर.
तो इसके रिस्पेक्ट में द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी एक ओरल रिमार्क दिया एंड ही सेड कि yes he conceded to the argument of the center by saying that yes an absolute argument cannot be made that there is no legitimate interest of the state. Thirdly, he argued with respect to effect on personal laws. तो देखिए हमने हमारे टीएनए में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डे 1 पे ही स्कोप इस पेटिशन के आर्ग्यूमेंट्स का डिसाइड करते हुए ये कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टिक टू द स्पेशल मैरिज एक्ट इटसेल्फ, हम पर्सनल लॉज में डाइवर्ज नहीं करेंगे. तो सेंटर का ये कहना है कि कितना भी कोशिश कर लो बट पर्सनल लॉज पे तो इम्पैक्ट होगा ही, इट इज़ इनएविटेबल. द फोर्थ आर्ग्यूमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ प्रिवेसी. तो द लैंडमार्क 2017 जजमेंट जहाँ पर प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था, उसमें ये कहा गया है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिस इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ राइट टू प्रिवेसी. उस जजमेंट में ये कहा गया था एंड आई कोट, इक्वल प्रोटेक्शन डिमांड्स प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, अनकोट. अब इसके रिस्पेक्ट में सेंटर का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, सेंटर इज सेइंग एंड आई कोट दैट इट इज सबमिटेड दैट कंसेंटिंग सेक्स बिटवीन टू adults it is in the sphere of privacy within the intimate zone. However, recognizing the relationship between the very same two individuals as marriage following in the public zone, it has a necessary and inevitable implication on the outer ramification of it, which is the concept of marriage. तो इसमें एक there is an element of public. Now let's understand the next argument, which is that parliament should be the deciding factor. तो सेंटर ने repeatedly ये कहा है कि जो decision है ना with respect to this concept of same sex marriage, the appropriate authority would be parliament and not court. The argument essentially is that there exists a democratic right of people to regulate themselves and that it cannot be mandated by a law, by a court. And then lastly, with respect to interpreting the laws, the center has stated that the key argument of the center is that the court cannot interpret the Special Marriage Act to include same-sex marriage in a meaningful way. And this has brought us to the next segment for today, which is the national news segment. The first update is with respect to City Beauty competition portal being made live. So see the City Beauty competition portal, it was launched by the Housing and Urban Affairs Ministry recently and now it has been made live. The urban local bodies across the country, they can participate in the competition through an online process, and as far as the object for the competition is concerned, it is to encourage and recognize the transformational efforts made by the cities to create beautiful, innovative and inclusive public spaces. Moving on to the next update, this is with respect to Army commanders reviewing operational preparedness and readiness of the Indian Army. So the latest edition of Indian Commanders Conference, which was organized for the very first time in a hybrid mode, it saw deliberations over wide-ranging strategic, training, human resource development and administrative aspects, and it took key decisions in shaping the Army for the future. Moving on to the next update for today, this is with respect to Agriculture Minister inaugurating Summit on Farm Machinery Technology. So the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Narendra Singh Tomar, he has inaugurated the Summit on Farm Machinery and Machinery Technology. This was organized by the Confederation of Indian Industry and the Tractor and Mechanization Association in New Delhi. The minister said that an amount of 6,120 crore and 85,000 rupees it has been released to the states during this time period for various activities in this particular domain. Moving on to the next update. India UK, they are to create India UK Net Zero Innovative Virtual Center. The center, this is going to provide a platform for all the stakeholders of both the countries to work together in areas like the decarbonization of manufacturing process, transport systems and green hydrogen as a renewable source. Pointing towards the country's net zero journey, Dr. Singh, he said, energy efficiency and renewable energy. These are central pillars where India has already taken the lead through various innovative schemes or initiatives like the India Solar Alliance and Clean Energy Mission.
And now the next update, which is in the segment of international news, this is with respect to UAE and Cambodia finalizing the CEPA. So the UAE and the Kingdom of Cambodia, they've finalized the terms of Comprehensive Economic Partnership Agreement, paving the way for a new era of trade and investment cooperation between the two nations. And this has brought us to the last segment for today, which is the legal update segment. The first update coming from the Honorable Apex Court in the case of Shri Rakesh Raman versus Shrimati Kavita. See, the Apex Court, in a notable judgment, it has recently held that irretrievable breakdown of marriage. It can be read as a ground of cruelty under Section 13, subsection 1, 1I of the Hindu Marriage Act for the dissolution of marriage. Moving on, another update is coming from the High Court of Bombay. So the Bombay High Court has recently held that spouse consent, it is not a mandatory requirement for organ donation under the Transplantation of Human Organs and Tissues Act of 1994, especially if the consent it is being withheld unreasonably or for extraneous reasons. The name of this particular case is Prasanna, Laxmikant, Joshi and another versus the state of Maharastra and others. And with this, we've come to an end for the TNA for today. In case you want to get access to the free study materials or the TNA slides used in this particular video, please feel free to join our Telegram channel using the link in the description, or you may scan the barcode here. In case you want to get access to the quiz which is based on yesterday's TNA, please click on the link which is provided for the same in the description of today's video. And these are the point of contacts in case you want to get in touch with LawSikho. Also, please don't forget to put down your answers in the comment section which were put to you in the first editorial for today. So with this, thank you for being with us.